everyone. Today I would like to discuss here some questions related with the plasma membrane. First question is, the polar head of phospholipid is also called as the hydrophilic end, and polar head means here the phosphate group, and non-polar means lipid chain, that is the hydrophobic. So polar head जो होता है वो उसे हाइड्रोफिलिक एंड भी कहते हैं. Second question, the degradation of plasma membrane of OHA during the fertilization is carried out by enzyme hyaluronidase. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक की फीमेल गमीट की, जो सेल्स अटैच होते हैं उसमें सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड, तो उसको डिग्रेड करने का काम एंजाइम हाइलुरोनिडेज करता है, जो कि स्पर्म रिलीज करता है वाया एक्रोसोम. क्वेश्चन नंबर थर्ड, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स रेफर्स टू रिस्पेक्टिवली. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, while एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी. जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. फोर्थ क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ phospholipid molecule from upward to downward and from downward to upward is respectively carried out by enzyme flippage and floppage. Enzyme flippage and floppage, they carried out the movement of the phospholipid molecule in plasma membrane. So the correct answer is option D. Then question number 5th, which of the following statement is oblique are correct? First, steroid gives the fluidity to plasma membrane is a correct statement. The phospholipid molecule can rotate around its own axis, it is also right. Third, the phospholipid molecule can show flip and flop movement. So third statement is also right. So here all of the above, all three statements are correct. In question number 6, the model proposed by the Singer and Nicholson in 1972 about the plasma membrane is called as सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल एक्सप्लेन किया था उसका नाम था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. सो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज मॉडल विच वाज प्रपोज बाय द सिंगर एंड निकोलसन इन 1972. क्वेश्चन नंबर 7, द हाइड्रोफिलिक टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन पोलर एंड. जो हाइड्रोफिलिक होता है वो पोलर ग्रुप यानी फॉस्फेट ग्रुप, जो हाइड्रोफोबिक होता है वो लिपिड या नॉन पोलर टेल उसे कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, एम्फीपैथिक मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स दे आर प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड द एम्फीपैथिक. क्वेश्चन नंबर 9, which type of the cholesterol occurs in the plasma membrane of the plant cell? In the plasma membrane, brachicosterol, stigmasterol and camposterol, all the three cholesterol molecules they are present. Then question number 10, which of the following statement is oblique are correct? Enzyme flippage and floppage do not require energy. Second, enzyme flippage and floppage require the energy in the form of ATP. So the correct answer is option B, enzyme flippage and floppage require energy in the form of ATP.